welcome Dr. Dileep Sadhankar to deliver his speech. Sir, yesterday's speech was very useful for students. Students got a clear idea about how to make an synopsis for the project, and we are eagerly waiting for the today's session. So I hand over proceeding to you, sir. Please, sir. Yes, sir. Good morning, everyone. Am I audible to you? Yes, Yes, sir. sir. So, let me start sharing my laptop screen with you. Kindly give your response. Yes, is it visible? Yes, sir. Okay, fine. Thank you. So, in the last session, actually, we have seen some basic thing when it comes to the development of a project. How to begin, what areas we have to explore. Then we have seen different types of project here you can work on. Then we had a discussion regarding project proposal. We have to prepare synopsis, before we actually start working on development of the project. So we must have some, blueprint so that what we are, what we need to do, what is the expectation. So everything we have to put, there in the synopsis. So we have discussed all these things, and this point we need to include. That is what I told you: title of the project, objectives, project categories, then tool, platform, the languages we need to use, then complete structure of the system, and at the end references. Okay. Now here I'm moving to the next slide. Today you will see actually, once you prepared synopsis, एक बार आपने synopsis prepare कर लिया, so what should be your next step? Okay. So let me just tell you, the entire process is called as here software development process. And this this entire process here, you can think it like that. No, it has a life cycle actually. Okay. Yesterday at the at the beginning when I started lecture this seminar, so I told you that this process, when you complete this process, and that means after the release of the software product, the actual thing that start working. Because here, you know once you develop the product, your job is not over. Okay. The point is that here it should be used, that should be used by the people. Okay. In order to, you know if you think that your product is really worth, that means here आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट सही में अच्छा है, तो उसको लोगों ने यूज करना चाहिए और करते रहना चाहिए. Okay. One more thing I want to add here. See, you as a beginner, okay, you may think differently. आप as a beginner जो है अलग तरीके से सोच सकते हो regarding the project. But you have to think it like that. When the IT company, bigger industries which are involved in development of software, now just think how much money, how much time they invest in, in development of the product. you know kitna time, kitna paisa, billions of rupees are, they invest actually. And if at the end of investment of these billions of rupees, you are this user, your customer is not using your product. Okay. So that means that may be a waste of your time and money. Okay. Just सोचो कि यार WhatsApp जो है, okay, now it is very successful one. So if you think कि ये कोई use नहीं करेगा, okay, नहीं किया होता, so that may be a big loss for the company. Okay. So after successful development of the product, the next thing is that here we have to keep on updating the product so that here it should be in use. People should, opt for it. Whenever they have number of options,
your product, your software should be the very first one. So आपको ये करते रहने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए, you have to keep on updating, you have to keep on adding functionalities to your product. So that is very important thing, and this involve, this form, uh, what we can say, software development life cycle. Okay, so लाइफ साइकिल जो है बहुत बड़ा होता है इसका. So what is software development life cycle here? It's a process used by software industry to design, develop, and test high quality software. Okay, high quality software. So usually जो industries होती है वो इस process को follow करती है, and it is advised to you, you need also, to follow all this process, so that if you want to, develop a successful product or quality product, so in that case here you also need to follow this process, okay, in order to develop a no software which will be, which may be successful. So ऑब्जेक्टिव अभी हम ये पढ़ने वाले, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द एम ऑफ दिस, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर that meets or exceed customer expectation, reaches completion within time and cost estimate. टाइम इज मनी, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डेवलपमेंट शुरू किया, आपने टाइम लिमिट दिया 6 महीने का, एंड यू आर गोइंग ऑन 1 ईयर 2 ईयर. इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज टाइम इज मनी. साल, महंगाई बढ़ती, इन्फ्लेशन, जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे उस प्रोडक्ट का कॉस्ट भी बढ़ेगा. सो द पॉइंट इज दैट हियर you have to finish that development within a particular time. And very important thing is that here, अगर कोई प्रोडक्ट जो है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइम में अगर आपको रिलीज करना है, ओके, तो यू that is very important, because if any rival companies are there, so in that case what happen here, if before your release of the product in the market, if they released it, so in that case here your product may not be successful one. Okay, क्योंकि आपके आपके प्रोडक्ट रिलीज करने के पहले उन्होंने अपना प्रोडक्ट जो है रिलीज कर दिया, तो क्या होगा, देयर इज ऑलवेज फर्स्ट मूवर एडवांटेज. पहले जो मार्केट में आता है उसको हमेशा ही एडवांटेज होता है. सो इन दैट केस हियर यू मे लूज that advantage. So that is very important. You have to, estimate the cost, you have to estimate a time before you actually start the development of the product. Okay, so it aimed to build solution using different technologies, then architecture and life cycle approaches in the context of different organizational structure. So keeping all the needs in mind, organizational structure, okay, you need to build a solution in order to solve whatever problem that organization may have. Okay, so you have to deal with a problem actually. Whenever you are developing a, application, you are, dealing with a problem which, people are facing, customer are facing, client is facing, and you have to work toward solving that problem. So here that is the objective here behind here development, software development process. So overall there are 7 phases. Okay, when it comes to the software development, there are total 7 phases. The very first one is called planning and requirement analysis. ओके, आपको प्लानिंग करना है और आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना है. सेकंड वन, डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट, व्हाट रिक्वायरमेंट एक्चुअली इज देयर बाय द क्लाइंट, बाय द, यू नो whoever is facing the problem, तो उनका जो है क्या रिक्वायरमेंट है, दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई. Then designing the product architecture, you have to work on each and every detail. Then building or developing the product, they're actually starting, building that, that means coding and, entire thing. Then you need to test the product. आपको जो है, after the development of the product, you have to test it, whether, you have, what are the product you have developed, it is working as per the expectation, as per the, initial whatever plan you have. So you need to check it, testing the product, and then here deployment in the market and maintenance. Market में release करना और उसके बाद में maintenance, as I told you, from time to time here adding functionality, keep on updating, keep on security updates. So whatever it is needed, okay. And let me remove this one. Okay, so there are total here 6 phases. Okay, so
Planning and requirement analysis, defining requirement, designing the product architecture, building or developing the product, then testing the product, and then deployment in the market, that will release of the product in the market, and then maintenance. Okay, now here the devil is in the detail of how the steps are organized and executed. Problem अभी यहाँ जो है कहाँ है, ये जो स्टेप्स है जो हमने यहाँ बताया हुआ है, ये हम अभी जो है इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. इट इज नॉट, although it looks like a one sentence, okay, it is not like that. You need a lot of hard work behind this one. Okay, आप सोचो कि आपने जो है सिनॉप्सिस बनाया है, अभी आपको आगे मूव करना है, यू नीड टू मूव अहेड. तो आपका जो जो अभी प्रॉब्लम जो है आपका यहाँ से शुरू होगा. यू हैव टू स्टडी लॉट. नाउ विल सी वन बाय वन. अभी हम क्या करेंगे, यहाँ वन बाय वन देखेंगे एग्जैक्टली व्हाट हैपन एक्चुअली हियर इन ईच स्टेप. हर एक स्टेप में हमको क्या करना है ये हम अभी देखेंगे. द वेरी फर्स्ट वन, एज आई टोल्ड यू, ओके, सो here, SDLC is a process followed for a software project within a software organization. That is what I told you. It consists of detailed plan describing how to develop, maintain, replace, and alter or enhance specific software. The life cycle defines a methodology for improving the quality of software and the overall development प्रोसेस. तो जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको एक प्रॉपर प्रॉपर वे में जाने के लिए जो है हमको SDLC जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो हमको फॉलो करना है. Okay, so the problem is what here, see, that is what, as you can see in the picture actually, the promise, you make the promise initially, it will be look like this, but actually at reality, you at the end of development of the product, you make it something horrible, maybe possible. Success rate of development of the product is very low in the industry. Please note. And if सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे मार्केट में आते हैं. देयर आर number of software you will find in the market. Okay, but only few are successful. बहुत कम जो है सक्सेसफुल है. For example, I told you yesterday, chatting application, you use WhatsApp. How can you tell me any 10 नाम बता सकते हो आप? There are many applications in the market, that makes you available chatting. Chat आप कर सकते हो, but you can name only few. You can count it on finger. आप जो है सिर्फ एक या दो ही नाम ऐसे ले पाओगे आप. That is the thing actually. So when actually development start ना, तो company makes a lot of promises, but in the reality here, at the end of the development here, the product you get that may not be useful. So because a lot of money is involved, a lot of time is involved, you have to take care of all this. Okay, so nothing is ever as simple as it seems. तो कुछ भी चीज जो है जितना हम देखते हैं उतना सिंपल नहीं होता है. So as we are discussing about the life cycle of the development of the application project, so this is not easy thing. Okay, now one more thing here I want to add here, relative cost of an error depending on when it is discovered. Now what is the why we are discussing actually, ये मैंने ग्राफ क्यों दिया? Yes, any one of you? Yes, ये ग्राफ का क्या मीनिंग है? Anyone? ताकि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेजेस में ही एरर डिटेक्ट करें. Exactly, very good. And as early as you detect the error, you find the error, you remove the error, that is better. The cost of removing error at the beginning, that is very less. Okay, if you find it out at the later stages, बाद में आपको पता चलता है, so the cost of correcting that, it will be higher. उसका जो cost होगा वो ज्यादा होगा. So that is why here we must understand, जितना जल्दी जो है हम issues को sort out करते हैं उतना जो है better है, in order to save the money. And that is why here, as you can see the picture in this chart, requirement, डिजाइन एंड देन कोड. इस फेजेस में आप अगर if you are able to find out what is the problem, you are sorting out the problem, you are sorting out the issue,
then it may be good. It will be good for the company, so that here future cost, higher cost that can be avoided. Fine. And that is the exact meaning of this is what. इसका कंक्लूजन क्या निकालोगे आप? यू हैव टू स्टडी लॉट एट द बिगिनिंग. आपको जो है बिगिनिंग में जो है जितना ज्यादा स्टडी करना है, जितना ज्यादा डिस्कशन करना है, जितना ज्यादा आपको इंस्पेक्शन करना है, ट्राई टू डू इट. Try to get solve your issues. Try to be very clear on what you are going to do. Okay. और ये आपको कौन बताएगा? अगर देखो, जब बड़ी कंपनी होती है तो जो कंपनी जिसके लिए वो एप्लीकेशन बनाते हैं, दोस क्लाइंट, they are involved, and now you are developing a project. अब आप क्या कर रहे हो? इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट बना रहे हो. So now here आपका कोई client, maybe there is a client or may not be any client. So you have to study, on behalf of the client. You have to work on it. यानी आपको तो एज अ डेवलपर आपको सोचना ही है, बट एज अ कस्टमर, एज अ यूजर, यू हैव टू थिंक ऑन इट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So your responsibility is more. Getting? Yes, sir. Yeah. And very important, one more thing here I want to add. The point is that here, uh, you may have a team of 2 or 3 people. 2 या 3 स्टूडेंट का आपका ग्रुप होगा. So let it be, have a discussion. आप डिस्कशन करो. डिस्कशन के थ्रू जो चीजें आगे आती है, जो maybe 2 people, 3 people have a different opinion about the situation, about the things. So that is better actually, so that you can uh, go ahead with proper detail solution. So that is what required actually. Okay. So initial discussion is always useful for the development of the project. So here we'll see working the SDLC steps. Now we'll see actually what happened in each step of the life cycle. So at the beginning here, then the very first stage is planning and requirement analysis. So once you know the problem, what is the problem? That is not enough. Okay. प्रॉब्लम जो है ये समझना उतना काम वहां पे खत्म नहीं हुआ है. You have to analyze whether whatever the problem is specified, it is correct or not. And for that here, requirement analysis has to be done. So requirement analysis is the most important and fundamental stage in project development. It is performed by the senior member of the team. So obviously, when you are developing a project, very professionally, so at that time, a big team is there. बहुत सारे लोग होते हैं उसमें. Okay. So if you are developing as a student, so there may not be any senior member, but you have to think on it. Okay. So you need to you need to give the input. You need to take the input as a as a team member, as a customer also. So you have to think in both way. Okay. Then again, to get more information, you can survey in the sense here you can take input from the people who actually working on it. For example, अगर आप जो है टीचर के लिए कोई आप प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, ओके, मे बी आप कोई टीचर के एक्टिविटीज के लिए, फॉर एग्जांपल मैनेजिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग द जो भी है सेशन. सो जस्ट थिंक कि आपको इसके लिए किससे बात करना पड़ेगा. As a student, you may not be aware of the problem or issues faced by the teacher while managing activities data. Are you getting my point? Yes. Yes, sir. So obviously here you need to discuss it with the teacher. So you need to take input from the teacher. That is what I'm saying. क्योंकि प्रोजेक्ट आप अगर उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ले रहे हो तो आप उनसे डिस्कशन करना जरूरी है, सो दैट यू विल गेट डिटेल इंफॉर्मेशन. ओके. Whatever, if you are developing a project, for example,
मे बी फॉर इंटरनेट कैफे, और आप इंटरनेट कैफे के लिए कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो तो आपका तो बिजनेस नहीं है, यू डोंट नो व्हाट आर द इश्यूज यू आर फेसिंग, यू नीड टू टॉक टू देम। आपको जिन जो एक्चुअली इंटरनेट कैफे जो चला रहे हैं, दोज हु आर ओनिंग इंटरनेट कैफे, यू नीड टू टॉक टू देम। ओके, इफ यू आर डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट फॉर एज नो ई कॉमर्स कंपनी के लिए कोई आप कर रहे हो, यू नीड टू टॉक टू देम, दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन बिजनेस एक्चुअली। Okay, if you are developing a project for event management company, so in that case you need to talk to them. So the thing is that here you have to conversation, you have to discussion with the people who actually work in that field. Okay, market survey in the sense here, lot of data is available over the internet. Okay, through survey a lot of data is available, so common, very generalized things that you can get it from market survey. So this information is then used to plan the basic project approach. तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, सो यू विल गेट बेसिक आइडिया, ओके, कि हमको करना क्या है, व्हाट आर द issues people are facing. Okay, maybe you will get an idea how to solve that problem exactly, or how, you can put it very in a simple way, maybe possible. Okay, because may, as many as people you are interacting with, you may get more clear picture. Okay, and here to conduct product feasibility study, okay, in the economical, operational and technical area. So ये भी आपको एक चीज करना पड़ेगा. Okay, see, again I am coming back to the same point. Why? Which point? कि सिनारियो इज अभी हम यहाँ दो सिनारियो लेके चल रहे हैं. वन, you are developing a project, you are not professional one, आप प्रोफेशनल नहीं है, right? You as a student developing a project. Second thing is that here we are also considering an IT company, people from IT company, they are developing a project. So obviously दोनों के लिए जो है कहीं ना कहीं थोड़ा जो है यहाँ डिफरेंस रहेगा, बिकॉज उनका प्रोफेशनल टीम है, आपका प्रोफेशनल टीम नहीं है. Okay, and here actually I'm trying to put point regarding their point of view, जो professionally जो है कैसे ये चीजें होती है, मैंने यहाँ ये चीज ऐड करने का कोशिश किया है. And somewhere here you also need to think about it. Okay, now let me just go through this point. Feasibility study in the economical or operational and technical area. Now what is feasibility study? Anyone? What is feasibility? क्या होता है? Anyone? फिजिबिलिटी पता है? यस, फिजिबल है कि नहीं है, दैट इज वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट. नो, देयर आर थ्री एरियाज. इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी. इकोनॉमिकल का मतलब क्या है? मनी, फाइनेंस, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी. So whenever you are developing a project and it involve finance, it involve money, so whether that project you are developing, it is financially it is viable or not, whether you are, for example, let me tell you one thing. अगर आपको जो है ऐसा प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया, फॉर एग्जाम्पल कि कॉलेज का जो है हम स्टूडेंट का अटेंडेंस लेंगे. अटेंडेंस किस पे लेंगे? बायोमेट्रिक्स पे. बायोमेट्रिक्स पता है सबको? बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस, फेस रिकॉग्निशन या आपका थंब रिकॉग्निशन. सो Yes, जस्ट थिंक, sir. तो जस्ट सोचो कि कॉलेज के गेट पे आपने कैमरा आपने लगा दिया है और आपने सॉफ्टवेयर बनाया है कि कोई भी बच्चा कॉलेज के गेट के अंदर आएगा, वो कैमरा उससे उसका फोटो कैच करेगा, वो ऑलरेडी उसके रिकॉर्ड में रहेगा, और वो कैच करने के बाद में वो आइडेंटिफाई करेगा और उसका अटेंडेंस वो ऐड कर देगा. मे बी समथिंग लाइक दैट. ओके, नाउ हियर व्हाट हैपन, प्रॉब्लम इज व्हाट, इट इन्वॉल्व फाइनेंसेस. फाइनेंसेस क्यों? क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी चीजें लगने वाली है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि वो कैमरा, अब वो कैमरा हाई डेफिनेशन कैमरा लगेगा. अब इसको आपको वो सब चीजें मैनेज करने के लिए आपको जो है बाकी और भी हार्डवेयर कंपोनेंट लगने वाले हैं. ओके, आपको बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा आपको वहां जो है ऐड करना पड़ेगा. सो लॉट ऑफ टाइम इज इन्वॉल्व, लॉट ऑफ मनी इज एज अ हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड. सो
here money is also required. So whether you are, you have that enough money to invest, है ना, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. सो जस्ट थिंक कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका जो है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी जो है वो आपको देखना पड़ेगा. वेदर यू कैन पे, वेदर यू कैन इन्वेस्ट दिस अमाउंट ऑफ मनी इनटू इट. ओके, सपोज आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि इसमें अपने 15-20 हजार रुपए खर्च होने वाले हैं. सो you are not going to do it actually, है ना. If you don't think कि आपको इतना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो why you are going with that one? So you need to check about this one, whether you can economically invest money into it. Operational issues in the sense here, what happens, say हम बोल सकते हैं यहाँ की the role of the people may be changed here. अभी यहाँ जो लोग जो है इसमें इन्वॉल्व है, उनका अगर यहाँ रोल चेंज हो रहा है, ओके, जस्ट आप 3 लोग आप उस चीज को जो है करने वाले हो, फाइन. देखो अभी ये जो फिजिबिलिटी आती है, ये कहाँ से आती है? दैट इज नॉट फ्रॉम डेवलपर साइड, दैट इज फ्रॉम द, जिस कस्टमर के लिए आप ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, ये वो साइड से हमको चेक करना है ना. अगर आप किसी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, तो कंपनी है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसे दे सकता है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा ना. इफ द ऑर्गेनाइजेशन having a turnover of 1 lakh and the project cost is 10 lakh, so obviously that organization is not going to pay 10 lakh, right? So that is what here economical, feasibility is there, because whatever things are involved, not that in that company is not going to pay for that, and they are not going to pay, give that product free of charge. So if, so that you have to understand whatever they are using, so that cost of the project will be calculated, and based on that here company has to pay that amount to the developing company. So like that here operational visibility here, जिसके लिए हम वो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, वहाँ जो role of the people may be changed after the introduction, after the working of that project. For example, I'm telling you the story, story in the sense not actual story, लेकिन 2000 के पहले, 2000 साल के पहले, यूज ऑफ कंप्यूटर का जो यूज है वो काफी कम जगह होता था. After the introduction of computer, it took many years, in actually in India, okay, that is used by the common people. It took a lot of time actually. Now after 2000 what happened? 2000 के बाद ऐसा क्या हो गया? तो let me tell you, 2000 में क्या हो गया, एक जो है बैंकिंग सिस्टम जो है उसमें काफी चेंज आ गया. ओके, सेंट्रल बैंकिंग सॉल्यूशन दैट इज प्रोवाइडेड. दैट मींस हियर पहले क्या होता था कि सपोज यू आर हियर इन नागपुर, सो यू वुड बी एबल टू ओपन अकाउंट इन सपोज एसबीआई ब्रांच इज देयर, एंड सपोज इन नागपुर देयर आर 10 एसबीआई ब्रांचेस, सो यू इट इज पॉसिबल फॉर यू टू ओपन 10 अकाउंट इन वन सिटी, एक ही बैंक में. ओके, बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ योर सेंट्रल बैंकिंग सॉल्यूशन, सो उसमें क्या होता था कि आप पूरे दुनिया भर में जो है कोई भी ब्रांच में जाके जो है आप सर्विस ले सकते हो. ओके, सो दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर. सो पॉइंट इज दैट हियर आई एम डिस्कसिंग कि आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इन ऑर्गेनाइजेशन, द रोल ऑफ द पीपल चेंज. लोगों का जो रोल है वो चेंज हो गया, राइट? जो लोग कभी कंप्यूटर यूज नहीं करते थे, उनको अभी कंप्यूटर यूज करना है. सो दे वेर हेजिटेटिंग टू यूज द कंप्यूटर. दे वेर ट्राइंग टू डिनाई, अरे हमारा तो अभी रिटायरमेंट है, हम क्यों कंप्यूटर, अभी ये उम्र में क्या हम कंप्यूटर सीखेंगे? ओके, मे बी दोज पीपल आर न्यू, सो यार हमको तो ये काम करने का आदत है, अभी हमको ये काम करना पड़ेगा. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हियर, अगर कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, मे बी ओके, ही इज डूइंग द वर्क ऑफ बाबू, ओके, मे बी पॉसिबल दैट कि उसका जो रोल है वो चेंज हो जाए, उसका जो डेजिग्नेशन है वो चेंज हो जाए. सो तो व्हाट हैपन हियर, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू थिंग, द रोल ऑफ द पीपल मे बी चेंज एंड देयर मे बी हेजिटेशन. वो एक्सेप्ट करने का जो हेजिटेशन रहता है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, ऑपरेशनल इश्यूज. ओके, सो आप कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, यू आर developing a product, so after the when people started using that product maybe in the future, so what change people may face, whether they will accept it positively or they are going to reject it. So that may be one of the reason for success of the project or for rejection of that project. So that both things are possible, है ना. लोगों ने पहले से मूड बना लिया कि ये इनका जो
हम जो भी प्रोडक्ट है, ये सॉफ्टवेयर जो है हमको यूज नहीं करेंगे, पहले से उनका निगेटिव अप्रोच है, सो चांसेस आर दैट योर प्रोडक्ट में बी फेल. सो that is the thing. Technical areas in the sense here, what are the things required. अगर आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्यूटराइज हो रहा है, सो व्हाट यू नीड, लॉट ऑफ कंप्यूटर. सो लॉट ऑफ कंप्यूटर you require licensed software. So a lot of things are required, technical things are required. You require money because that also involve money. Okay, you require technical expert. So whether you have it or you have to, appoint new people. So when you are considering a project at large scale, so these issues may be faced by the organization, and that has to be considered before the actual start of the development of the project. So planning and requirement analysis, क्या required है, so that has to be done at the beginning. Are you getting it? Yes, sir. Yeah. So planning for the quality assurance requirement and identification of the risk associated with the project is also done in the planning stage. Okay, and you have to more focus on the requirement front. Okay, risk associated, because whatever we had a discussion till now, so that are sort of risk. If that risk are not identified before the start of the project, so chances are that your product may not be used by the people. So the outcome of the technical feasibility study is to define the various technical approaches that can be followed to implement the project successfully with minimum risk. तो कम से कम रिस्क में जो है हमको कैसे जो है हमारा जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, सो दैट गिव्स द गारंटी. देन डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट. ओके, सो देखो अभी पॉइंट क्या है कि इसमें when you are conducting feasibility study, that output, that report will be generated. क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हो उसके बाद में सिर्फ डिस्कशन ही होना है. इट इज नॉट लाइक दैट. दैट रिपोर्ट हैज टू बी जनरेटेड. दैट पॉइंट हैज टू बी पुट ऑन द टेबल बिफोर द इन्वेस्टर. जिसके लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनके साथ में अभी डिस्कशन होगा. दीज आर दैट इशू शुड बी डिस्कस्ड इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट मे बी. Okay, and what they think about it, whether they are ready to go with these things, whether they know. I mean, everything should be aware. Those people should be aware of this. So here feasibility study का क्या reports है, that has to be given, and based on that here, based on the input given by the management here, further action will be decided. So once the requirement analysis is done, the next step is to clearly define and document the product requirement. यानी आपका जो प्रोजेक्ट है उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उसका डॉक्यूमेंटेशन, एंड गेट देम अप्रूव्ड फ्रॉम द कस्टमर और द मार्केट एनालिस्ट. दैट इज व्हाट आई सेड कि एक बार आपका जो है यहाँ रिक्वायरमेंट एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी आपका हो जाता है, सो यू हैव टू गेट इट अप्रूव्ड. है ना, आपको अप्रूव करना पड़ेगा कि दिस इज द थिंग, वेदर वी शुड हैव टू गो अहेड विद दिस थिंग और नॉट, वेदर यू आर रेडी फॉर दिस थिंग और नॉट, whether you are able to pay certain this amount for development of the product or not. So all these thing will be confirmed. If it is not viable na, so in that case here thing will be stop there. Because if, for example, in feasibility study it is found that that as I told you at the beginning, that if one has 1 lakh rupee, that is the cost of the project initially we decided, and after the feasibility study we found that it is 10 lakh. So obviously management is not going to support this one, and there that's why your project need to be stopped. So that is what the output that may be received. So this is done through SRS, software requirement specification. Okay, document which consists of all the product requirement to be designed and developed during the project life cycle. तो ये पूरा का पूरा जो requirement है in the form of feasibility study, that has to be specified as a software requirement specification, that is SRS document, जिसको हम बोलते हैं यहाँ feasibility report. Got it?
you have to state it clearly. अगर ये अप्रूव होता है obviously इसका solution भी रहेगा. If any problem is there, okay, the best solution will be given by the team, analyst team जो भी रहेगी, those who are involved in the development, okay. And if it is accepted, then the next stage will be started. यहाँ से अगर चीजें एक्सेप्ट होती है तो यहाँ नेक्स्ट स्टेज की तरफ हम मूव करेंगे. दैट इज स्टेज नंबर 3, डिजाइनिंग द प्रोडक्ट आर्किटेक्चर. अभी यार डिजाइनिंग वाला आता है. आप लोगों ने एसएडी सैड सब्जेक्ट पढ़ा है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग. यस एवरीवन? Yes, sir. उसमें जो है बेसिकली आपने 4 स्टेजेस पढ़ा होगा. लेट मी रिमाइंड यू. सिस्टम एनालिसिस, दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप. सिस्टम डिजाइन, सेकंड स्टेप. Then system testing and then system maintenance. Am I correct? Yes, sir. So you can think of it like this. तो यहाँ जो पहले जो 2 स्टेज के बारे में बात किया मैंने, the very first one planning and requirement analysis, then second step defining requirement. Now these 2 stages are dealing with the system analysis, क्योंकि यहाँ analysis हो रही है, inspection, requirement gathering, entire, and having a discussion over it. So, and after all that, here coming out with the solution, okay, and finding and discussing it with the management, discussing with the customer, client, and then if it is okay, then going with the next phase. सब सही है यहाँ तक. तो आप जो है next stage की तरफ move करोगे, that is designing the product. अभी यहाँ product designing start करोगे. So software requirement specification is the reference for product architects to come out with the best architecture for the product to be developed, best solution. You are coming with the best solution. That means here whatever the things you identified in at the beginning stage, at stage 1, you are coming out with the best possible solution in order to work on the issues whatever that organization is currently facing. So based on the requirement specified in SRS, usually more than one design approach for the product architecture is proposed and documented in a TDS, that is design document specification. तो होता क्या है कि solution जो है होते हैं, there are more than one solution is provided, okay, maybe for to minimize the cost of the project, maybe to minimize here the technical issues that may be involved in the project, to minimize the operational issues that may be involved in the project. So here more than one solution will be provided, and from development point of view, here best approach, best solution will also be suggested to the management, so that here uh, next course of action can be decided. Okay, now here the point is that here अभी हम बात कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल फर्म कैसे करेगी उसके बारे में बात कर रहे हैं. That means when you are developing a project for the bigger organization. लेकिन as an intern, as an internship, you are developing a project. तो आपका क्या आएगा कि जो भी आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है ना, ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट जो भी आप डेवलप करोगे, जो भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करोगे, you are identifying a problem कहाँ आ रहा है, and then you, in order to solve that problem, you are working on the new thing. सिंपल चीज होती है. सपोज there is a project you may start, you want to work on, maybe college management system, for example, college management system. Now reason maybe अभी आप college management system क्यों लेना चाहते हो? सपोज आपके प्रीवियस ईयर में यानी आपके लास्ट ईयर में किसी ने वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी लिया होगा. वेदर यू कैन डू इट ऑन द सेम इश्यू, यस यू कैन डू इट. ऐसा जरूरी नहीं कि उसने भाई इसके पहले लास्ट ईयर जो है उस टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट हो गया है तो इस साल आप नहीं ले पाओगे. यू कैन टेक इट. उसने उसके पहले सी या C++ में या जावा में वो प्रोजेक्ट किया होगा. ओके, नाउ दिस टाइम यू कैन गो विद द .NET. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Am I correct? Yes, sir. है ना? So obviously you are doing something better. क्योंकि अभी C++ or whatever language you are using, so these are the traditional language, and the problem with this language is what? Database issues are there. Handling database issues are there. Another problem is that here interface, उसका जो interface होता है, that is not so much
user friendly, or that is very boring actually. Okay, when you are writing a program in C and C++, तो जो interface होता है वो black and white generally होता है, and if you want to make color, so a lot of complexity arises. So the point is that here you can go with the VB or VB.NET. You can use these languages so that your project screen जो भी होता है इंटरफेस जिसको हम बोलते हैं, इट मे बी कलरफुल है ना, अलग अलग विंडोज, सो वेरी वेरी इंटरेक्टिव प्रोजेक्ट यू कैन मेक. सो द पॉइंट इज दैट हियर कि आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो. पहले जो है वो प्रोजेक्ट जो है नॉन इंटरेक्टिव था, मे बी यूजर इंटरफेस जो है नहीं था प्रॉपर, मजा नहीं आ रहा था लोगों को काम करने के ऊपर. नाउ यू मे बी एबल टू यूज अ very good graphical user interface, so that that added advantage you may get. And handling database using maybe .NET, that is much more better experience rather than handling the database using the C or C++ language. Okay, so the point is that here कि हम problem identify करना है and you have to come with the better solution, right? एक ही रूट के ऊपर 2 ट्रेन चलती है ना, या 3 भी चलती है या 10 भी चलती है. Am I correct? Yes, sir. So why there is a need of this, है ना, जरूरत क्यों है? बिकॉज एक वन प्रॉब्लम में भी देयर कि भाई एक ट्रेन में ज्यादा लोग नहीं आते हैं, तो मे बी दैट्स व्हाई देयर आर 2 ट्रेन. लेकिन 3 भी होती है, मे बी प्रॉब्लम एक और प्रॉब्लम आ सकता है कि भाई जो ट्रेन है वो उसका टाइमिंग प्रॉपर नहीं है, दोपहर का 12 बजे का, सवेरे का 10 बजे का है. पीपल वांट टू सेव देयर टाइम, तो तीसरा ट्रेन ऐड कर दो, उसका टाइम रात को 6 बजे का दे, शाम को 6 बजे का दे दो या 8 बजे का दे दो. गेटिंग? देन देयर मे बी अनदर प्रॉब्लम. व्हाट? शाम को जो ट्रेन है, मैक्सिमम पीपल वांट टू ट्रैवल फ्रॉम दैट, so you add one more train, there may be more problem. क्योंकि वो ट्रेन जो है स्लीपर कोच वाली है, so you can add one more train जो सिर्फ एसी वाला रहे. You can add one more train Duranto, you want to go very fast, बाकी ट्रेन बहुत स्लो है. So identifying requirement and keep on adding functionality to it, that is what I am saying. आप problem identify करो और आप solution, you come with the solution. Am I clear to you? Yes, sir. सो दैट इज वेरी फर्स्ट. अगर आप ये सही तरीके से करते हो ना, तो आगे आपका पिक्चर सिनारियो क्लियर होता है. और ये कब आप आइडेंटिफाई करोगे? व्हेन यू हैव अ गुड डिस्कशन, व्हेन यू हैव अ गुड मार्केट सर्वे. ये जब करोगे तभी ये चीजें क्लियर होना है. ओके, घर में बैठ के कुछ नहीं होना है. घर में बैठ के भाई है ना, सो के कुछ नहीं होने वाली. यू हैव टू वर्क ऑन द पेपर, यू हैव टू राइट फिगर्स, यू हैव टू हैव अ डिस्कशन with the people, those actually working on it, those who are actually facing the problem. जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, है ना, आपके घर के आसपास थिएटर हो गए, है ना. आप सोचो कि आपके घर के आसपास अगर 2 थिएटर है, एक सिंगल स्क्रीन वाला, एक मल्टीप्लेक्स वाला है ना, दोनों होने के बाद मे बी चांसेस या थर्ड पर्सन में हैव चांसेस टू ओपन थर्ड थिएटर, राइट? सो यू कैन, यू हैव टू कंसिडर, यू हैव टू थिंक ऑन कि यार ये अभी जो सिस्टम है इसमें क्या प्रॉब्लम है. यू हैव टू थिंक ऑन क्या प्रॉब्लम है यार, कि अगर हम ऐसी सिस्टम बनाएंगे तो इसमें जो है क्या बेटर हम देंगे कि लोग वो छोड़ के यहाँ आएंगे या वो छोड़ के ये यूज करेंगे. आई होप यू आर गेटिंग अ पॉइंट. सो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट एंड कम विद द सॉल्यूशन. यू हैव टू कम विद द सॉल्यूशन. सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करना, आपको सॉल्यूशन के साथ में भी आना है कि आप जो नया प्रोडक्ट डेवलप करोगे, जो नया प्रोजेक्ट आप वर्क करोगे, वो आपका जो है कैसा होगा. So that is what you are doing in stage 1 and stage 2. Stage 3 design करना. Okay, so you have to come with the solution. Okay, यानी वो कैसा रहेगा. जैसे कि आपने प्रोजेक्ट प्रपोजल में बताया था कि मॉड्यूल क्या रहेंगे, है ना, कौन से मॉड्यूल रहेंगे, है ना. What will be the possible report, आप जो रिपोर्ट जनरेट करोगे तो पॉसिबली वो कैसा होगा, रफ आइडिया. करेक्ट? जैसे अगर व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप में अगर कुछ नया अपडेट आता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि भाई वो बैठ गया उसको कर दो, ऐसा नहीं होता है. इट्स नॉट लाइक दैट. दे हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशन कि भाई जो नया हम ये करेंगे उसमें स्क्रीन कैसा दिखेगा, हाउ द स्क्रीन विल लुक लाइक, वेयर द ऑप्शंस विल बी देयर, ऑप्शन कहाँ रहेगा, है ना. अगर आप आपका व्हाट्सएप यूज करते हो, है ना, मेनी ऑफ यू यूज व्हाट्सएप. व्हाट्सएप का जो इंटरफेस है,
है ना। पहले पहले जो है चैट्स होती है, अगर आपने देखा है तो तीन ऊपर में तीन टैब्स होती है, एक होता है चैट्स, दूसरा क्या होता है स्टेटस, राइट, am I करेक्ट? Yes, sir. और तीसरा क्या होता है कॉल्स, am I करेक्ट? Yes, sir. एट द टॉप यू विल फाइंड सर्च बटन, आप सर्च कर सकते हो, आप चैट में चैट सर्च कर सकते हो, स्टेटस में स्टेटस सर्च कर सकते हो, कॉल में आप कॉल सर्च कर सकते हो। एट द राइट साइड, राइट टॉप जो है यू विल फाइंड थ्री बटन देयर, तीन बटन होते हैं, उसमें आप देखोगे कि यू विल गेट नंबर ऑफ ऑप्शन, न्यू ग्रुप, न्यू ब्रॉडकास्ट, लिंक डिवाइसेस, स्टार्ट मैसेज, पेमेंट्स सिस्टम एक्सेट्रा। सो यू जस्ट थिंक कि ये चीजें कैसे अरेंज किया हुआ है ना। इट इज यूजर जो इंटरफेस है दैट इज यूजर फ्रेंडली, यानी जो यूजर उसको यूज कर रहा है उसको वो यूज करना आसान लग रहा है। दैट इज वन ऑफ द की बिहाइंड सक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि आप जो स्क्रीन डिजाइन करते हो ना, स्क्रीन डिजाइन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी बड़ी जो मूवीज जो डायरेक्ट शो करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो मूवी कहाँ शूट होने वाली है, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, लॉट ऑफ स्टडी, बहुत सारी स्टडी करते हैं। सेट बनाने के पहले भी बहुत सारी डिजाइनिंग ऑन द पेपर डिजाइनिंग होती है, देन दे कंस्ट्रक्ट द एक्चुअल सेट। सो एट द एंड द पॉइंट इज दैट हियर करना क्या है, हमको डिटेल स्टडी करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। एम आई क्लियर टू यू? Yes, sir. So detailed study, and based on that study here you are coming with the solution, different solution, number of solution, best solution, okay, and you are, that is what the part of actually अभी ये डिजाइनिंग में क्या हो रहा है एक्चुअली जो है आप उसको अभी इंप्लीमेंट कर रहे हो। ओके, डिजाइनिंग में क्या कर रहे हो अभी आप उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट कर, अभी तक जो चीजें पेपर में थी, अभी तक जो चीजें पेपर में था अभी आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, क्योंकि आप इसमें जो है यू आर डूइंग, आपने सॉल्यूशन में आपने सब कुछ बता दिया है। सॉल्यूशन में क्या बताया आपने, हाउ द इंटरफेस विल बी लुक लाइक, हाउ which languages, which technology you are using to develop that product, how much time it will take, how much money it will take, how many man, how many people will be required, what are the changes in the organization, a lot of things are there. And here in designing you actually start developing that product. So here design document specification is reviewed by all the important stakeholder, and based on various parameters as a risk assessment, product robustness, design modularity, budget, and time constraint, the best design approach is selected for the product. A design approach clearly defines all the architecture module of the product along with the communication and data flow representation. तो बोलने का मतलब है जो आप सॉल्यूशन के साथ में आ रहे हो दैट विल कंटेन जो आपका प्रपोजल है, जो आप सिनॉप्सिस की हम बात कर रहे हैं, सो दैट इज नथिंग बट द हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन। उसमें अपने जो पेज की बात किया था, इफ यू रिमेम्बर, याद होगा आपको, ये हमने एक पेज जो प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल है उसका जो पेज था उसके बारे में हमने जब बात किया था, उसमें ये नाउ यू कैन, ये जो पिंक कलर में आपको जो दिख रहा है ना, पिंक कलर में बेसिकली, सो ये है डिटेल डिजाइन। तो ये आपको you have to think on it very very in detail. So just a minute, coming back to the same slide. Okay, so designing, that means actually आपको यहाँ आपने फाइनल जो है आपको कोडिंग, यू कैन थिंक ऑफ कोडिंग, आप कोडिंग यहाँ जो है शुरू करने वाले हो स्टेज 4 में। ओके, डिजाइनिंग पार्ट, फॉर्म कैसे रहेगा, एक्सेट्रा, कहाँ से इनपुट आएगा, उसको कैसे दिखेगा, एंटायर थिंग यू डिसाइड ऑन द पेपर। अब पेपर से आप क्या आ रहे हो, एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। यानी अगर आपने सोचा है कि मुझे डॉटनेट में कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उसका कोडिंग आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, यू आर स्टार्टेड कोडिंग ऑन टू इट। आपको लग रहा है कि ये इंटरफेस ऑन द पेपर ऐसा दिखना चाहिए, यू आर एक्चुअली हियर डिजाइनिंग दैट। Okay, so in this stage SDLC the actual development start and the product is built. एक्चुअल कोडिंग करना पड़ेगा और जो है प्रोडक्ट जो है आपको बिल्ड करना है। द प्रोग्रामिंग कोड इज जनरेटेड एज पर द रेडियस व्हाट इज स्पेसिफाइड देयर इन द डॉक्यूमेंट
If the design is performed in the detailed and organized manner, code generation can be accomplished without much hustle. यानी अगर आपने स्टडी जो है, आपने जो डिजाइनिंग जो पार्ट है वो प्रॉपरली किया हुआ है, तो आपको प्रोग्रामिंग पार्ट में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए और नहीं आता है. Developer must follow the coding guideline defined by their organization and programming tool like compiler, interpreter, debugger, etc. यानी आपको जो भी आप लैंग्वेज जो भी यूज कर रहे हो, उसको जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है वो आपको जो है फॉलो करना है टू डिजाइन द कोडिंग. सो वंस यू आर कमिंग विद अ सॉलिड प्लान, ओके, आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी इशू रिगार्डिंग द प्रोग्रामिंग. अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग भी आना चाहिए. इट इज नॉट लाइक दैट कि आपका प्लान ही अच्छा है और आपको प्रोग्रामिंग नहीं आता है. सो एज अ इंटर्न यू कैन नॉट डू इट. इट्स कॉमन सेंस कि आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आती है आप वो सिलेक्ट करो. अगर नहीं आती है तो यू ट्राई टू वर्क ऑन इट, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, you must be master in that one. Okay, so the programming language is chosen with respect to the type of the software being developed. तो किस तरह का सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू सेलेक्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, इफ यू वांट वेरी इंटरेक्टिव प्रोजेक्ट, इफ यू वांट वेब बेस्ड प्रोजेक्ट, तो ऑब्वियसली आई विल सजेस्ट यू टू गो विद द PHP, राइट. PHP, Python, whatever you want to use, you use it. Okay. अगर आप जो है विंडोज बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहे हो तो you go with the .NET. Okay, that project can be interactive also. Okay, if you want to platform independent, then you can go with the Java. If you want to go with the traditional projects, go with the C++. So like that here, आप जो project कर रहे हो, okay, depending on the kind of thing, kind of requirement you mention, you have to select the language. Okay, so moving to the next, after the development of the product here, the next stage is what? Testing. आपको जो प्रोडक्ट है उसको टेस्ट करना है, क्योंकि आप डेवलपमेंट करके आप मार्केट में जो है वो प्रोजेक्ट नहीं दे सकते. बिकॉज इफ देयर इज एनी एरर ना, सो दैट इज अ बिग लॉस. After the release of the product, if you find out the issues, so that is not a good professional way of handling things. So it has to be tested. So this stage is usually a subset of all the stages, okay, as in the modern SDLC model. So these testing activities are mostly involved in all stages of SDLC. Testing जो है वो आपको हर एक जगह आपको ये करना पड़ेगा. बिकॉज टेस्टिंग, आपको टेस्ट क्या करना है ये भी आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा. इट इज नॉट अ वन स्टेप प्रोसेस कि आपका प्रोग्राम शुरू हो गया आप टेस्टिंग कर लो. नो, यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या इनपुट देना है. यू हैव टू मेक इट रेडी सेट ऑफ इनपुट. आपको जो है जितने भी सेट ऑफ इनपुट्स है वो पहले से डिसाइड करके रखना पड़ेगा. यू हैव टू डिसाइड व्हाट द एक्सपेक्टेड आउटपुट इज देयर. इट मस्ट बी इन लाइन विद दैट document for testing whatever you have prepared one. There are n number of टेस्टिंग जो है बहुत सारे मेथड्स होते हैं. ओके, यू मस्ट बी हर्ड ऑफ अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. सो number of testing are there. So whatever is suitable for your project, that has to be identified. ये हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका जो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट ऑब्वियसली. ओके, सो टेस्टिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज मेनी एज ओके, जितना ज्यादा टेस्टिंग कर सकते हो, जितने ज्यादा आप एरर निकाल सकते हो वो निकालना है. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंटैक्स एरर. सिंटैक्स एरर की बात नहीं कर रहा हूं मैं. सिंटैक्स एरर तो आपका कोडिंग के वक्त ही निकल जाएगा. हम बात कर रहे हैं लॉजिकल टेस्ट का. दैट मीन्स वेदर your product is generating correct output or not as per the expectation, as per the whatever cases you have designed earlier in the डिजाइन फेज. तो ये आपको टेस्टिंग में देखना पड़ेगा. जितना आप टेस्टिंग में जितना ज्यादा एरर निकालते हो उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट जो है एरर फ्री रहने का चांसेस है. ओके, क्योंकि हर बार जो है, बिकॉज आपको नॉट ओनली यू हैव टू थिंक योर ओन वे, यू हैव टू थिंक ऑन पीपल. जो कस्टमर है उनके एंगल से भी आपको सोचना पड़ेगा. व्हाट मिस्टेक दे कैन डू, वो कौन से मिस्टेक कर सकते हैं ये भी आपको सोचना पड़ेगा. व्हाट, बिकॉज यू आर यूज्ड टू दैट टेक्नोलॉजी, बट दे आर नॉट यूज्ड टू दैट टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज द थिंग यू हैव टू थिंक ऑफ. ओके, यानी जो लोग वो यूज करने वाले हैं उनका क्या माइंडसेट होगा, हाउ दे कैन यूज इट, व्हाट मिस्टेक दे कैन डू, यू हैव टू थिंक ऑल दिस वन. Okay, so if you think like this, then the possibility is that here that product you develop, okay, most of the error will be removed. So however, this stage refer to the testing only.
stage of the product where product defects are reported, tracked, fixed and retested until the product reaches the quality standard defined in the SRS. तो आपने जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है उसमें आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए उस उस क्वालिटी एश्योरेंस तक, उस स्टैंडर्ड तक जब तक आपका नहीं पहुंचता है तब तक आपको टेस्टिंग करते रहना पड़ेगा. दैट इज व्हाई द वर्ड एक्चुअली आई हैव ट्राइड टू इनपुट हियर, रीटेस्टेड. यानी ऐसा नहीं कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, आपको उसको वापस रिटेस्ट करना है. अगर एक इनपुट के लिए कोई आपका गलत आ रहा है, आपने वो करेक्ट कर लिया, यू हैव टू अगेन टेस्ट इट फॉर द सेम इनपुट कि अभी ये इनपुट देने के बाद में अब सही दे रहा है कि नहीं. So that is the thing here. So not only you need to report that error, okay, you have to track it, you have to fix it and you have to retest it. Okay. So जब तक आपका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड जो भी है आपका आपने सेट किया हुआ है, जब तक आपको लगता है कि नहीं we have reached that to that standard, till that time you keep on testing that thing. Finally, deployment in the market and maintenance. Deployment in the market, that means release karna, so that people, so that customer can use that product. So once the product is tested and ready to be deployed, it is released formally in the appropriate market. Okay, you must be aware of that beta product. पता है कि आपको बीटा वर्जन सुना होगा आपने. आपने जैसे व्हाट्सएप है उसका भी बीटा वर्जन मिल जाएगा. बीटा वर्जन जो है जनरली क्या होता है, तो जनरली क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है, व्हाट्सएप का जैसे बीटा वर्जन है, तो वो क्या होता है कि डेवलपर तो उसको यूज कर रहे होते हैं, बट दैट इज रेडी, दैट पीपल कैन आल्सो यूज इट. क्योंकि एक्चुअली लोग कैसे यूज करते हैं, व्हाट एरर पीपल फेस, ओके, दैट हैज टू बी नोटेड. वो नोट करना बहुत जरूरी है ना. आप एक चीज देखो, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डू इट. आपको कुछ भी एरर आता है ना, आप प्ले स्टोर में जाओ, उस ऐप का फीडबैक दो, आपको जो भी इश्यूज आ रहे हैं. कभी किया है आपने ऐसा? यस. आप जो भी ऐप यूज करते हो, जैसे व्हाट्सएप है, आपको लगता है कि व्हाट्सएप में ये प्रॉब्लम है, यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, यू गो टू द प्ले स्टोर एंड यू गिव द इनपुट. आप उसमें जो है ना आप प्रॉब्लम डाल दो, दैट टीम विल कॉन्टेक्ट जो है ना, फोन नहीं करने वाले आपको, वो आपको आंसर करेगी, वो अपना फीडबैक देंगे और वो नोट डाउन करते हैं कि भाई आपने ये प्रॉब्लम फेस किया है. तो वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू वर्क ऑन देयर साइड. अगर आपका प्रॉब्लम जेन्युइन है, दे विल ट्राई कि आपका प्रॉब्लम जेन्युइन है या आप ही वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि नहीं. तो इनकेस अगर आप ही वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको बताएंगे कि आप ऐसा करके देखो. गेटिंग? और वो आपका प्रॉब्लम जेन्युइन है ना, सो मेनी टाइम दोस पीपल रिवॉर्ड यू. बड़ी बड़ी कंपनी रिवार्ड करते हैं. आप गलतियां निकालो उनके सॉफ्टवेयर से, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है ना, व्हाट्सएप है, माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल का है. तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां ये क्या करती है, इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट मिस्टेक एंड इफ दैट मिस्टेक आर जेन्युइन मिस्टेक ना, दे विल रिवार्ड यू. वो आपको डॉलर में आपको पैसे देते हैं आपको, और आपने ज्यादा निकाला तो आपको सीधा अपॉइंट ही कर देंगे. दे विल अपॉइंट यू. सो जस्ट थिंक, they will appoint you as a tester, debugger. आपको डिबगर करके वो अपॉइंट करेंगे कि भाई ये जो है ना गलतियां वो अच्छा निकालता है, जेन्युइन निकालता है. सो द पॉइंट इज दैट यार दिस इज फुल प्लेज जॉब. टेस्टिंग जो है ना, टेस्टर का जो है फुल प्लेज जॉब होता है. अगर आप, इफ यू आर वेरी गुड इन डिबगिंग, इफ यू आर वेरी गुड इन आइडेंटिफाइंग द मिस्टेक, देन आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर दैट टेस्टिंग जॉब. वो उसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है. सो हियर I'm coming back to the point. So here, when the product is developed, that can be deployed in the market so that people can use it. Okay. And sometime what happen here, ये जो deployment होता है, जो product का release होता है, ये भी उसके भी अलग अलग तरीके हैं. There are different way of deployment or release of the product. Okay. कभी कभी क्या होता है, as I have mentioned here, the sometime product deployment happen in stages. एक साथ पूरा प्रोडक्ट रिलीज नहीं करते हैं, वो स्टेज बाय स्टेप जो है, फंक्शन बाय फंक्शन जो है, वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में रिलीज करते हैं. अगर एक सक्सेसफुल होता है, देन सेकंड फंक्शन रिलीज करेंगे. सेकंड रिलीज होता है, वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन थर्ड विल बी. सो स्टेज बाय स्टेज रिलीज भी होता है. ओके. या तो फिर पूरा का पूरा भी होता है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर. ओके.
So the product may first be released in the limited segment. Limited segment में release होता है, यानी कोई पर्टिकुलर यूजर के लिए रिलीज होगा, बाद में पूरे सबके लिए होगा. So that is also possible. ओके, बहुत बार जनरली ये वाला टेक्निक होता है. पहले तो आप अपने और जो भी कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां वो रिलीज करते हैं ताकि उनके एम्प्लॉय उसको यूज करें. अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, देन इट विल बी रिलीज फॉर द जनरल पब्लिक. So that is also happen. So then based on the feedback, the product may be released in the market with suggested enhancement. अगर कोई suggestion देता है, कोई feedback देता है, तो suggest if that suggestions are genuine, obviously, then that thing will be reflected, corrected, and then here that will be released in the market. So chances are high if if you are doing it very seriously and properly, your product will be successful one. Okay, now obviously after the release of that product, the next phase started. That is what called as maintenance. So its maintenance is done for the existing customer base from time to time. वो फिर वो चलता रहता है. ओके, एज पर द रिक्वायरमेंट कीप ऑन एडिंग न्यू फंक्शनलिटी, वो ऐड होती रहती है और जो है उसमें चेंजेस करके जो है वापस को जो है प्रोडक्ट री रिलीज करते रहते हैं मार्केट में. ओके, आप देखते हो व्हाट्सएप के वर्जन आते रहते हैं, फेसबुक, आपके प्ले स्टोर पे जो भी एप्स होती है जनरली हर इसके जो, अगर इफ यू आर यूजिंग वाइडली यूज एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन जो है बहुत सारे लोग यूज करते हैं, दैट मीन सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अपडेट्स आपको आते रहते हैं. सो दैट मीन्स हियर कि उसमें कोई नया फंक्शनलिटी ऐड हो गया, कुछ सिक्योरिटी फीचर्स ऐड हुए हैं, कुछ प्राइवेसी फीचर ऐड हो गए, या कोई नए फंक्शंस ऐड हुए हैं. सो मे बी बेस्ड ऑन दैट हियर the new function will be keep on adding and people will enjoy and working on that product. Okay, and obviously here that is how company earn. जितना ज्यादा लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, जितना ज्यादा प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, उतना ज्यादा उनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा. ओके, सो दिस इज व्हाट द स्टेप मेंटेनेंस happen. Okay, so I'm not going through it, and there are different types of model. I'm just not going through it because already a lot of time is gone. Any question is there, you are free to ask. No, sir. Anyone else? Okay, okay. I think there is no question, so I will stop here. So thank you as you listen very carefully. Thank you, sir. Students, do you have any questions you can ask related to your project or internship project? Is there any question? No, ma'am. आपको कुछ भी सवाल पूछना है ना, कुछ भी, वॉट एवर इट कम्स टू योर माइंड, अपार्ट फ्रॉम टॉपिक के अलावा नहीं है, यू आर फ्री टू आस्क मी. आपको लगता है कुछ भी ऐसा आपको इश्यू आ सकता है, मे बी फ्रॉम फर्स्ट ईयर और सॉरी सेकंड ईयर और मे बी फ्रॉम फाइनल ईयर, वॉट एवर. डोंट थिंक कि भाई ऐसा सवाल मैं पूछ रहा हूँ. आई विल अप्रिशिएट. I don't think there is any question, man. Okay, sir. Thank you, sir. You have delivered your speech in such a way student got a clear idea about how to make project, what is SDLC, what are the steps involved to make project. So I think they have got clear idea. That's why they are not raising any question. So thank you very much, sir. So we can